everyone, this is Priyanshi and आज मैं आपके लिए लाई हूँ important questions for chapter 2 self and personality. So जब मैंने इस chapter का lecture दिया था तो उससे मैंने एक चीज़ कही थी कि ये chapter बहुत important है from your exam point of view and from psychology point of view itself. क्योंकि इधर आपका psychological development of thought temperament तो हो ही रहा है. Side by side this chapter is also kind of very favorite for somebody who sets an exam paper, right? क्योंकि इस chapter में there are theories, there are concepts which are very crucial and indignant for psychology itself. So today we will discuss those questions and we will see how to answer them. I will give you some tips and some tricks also in order to score marks. So शुरुआत करते हैं 2 मार्कर से. So how is personal identity different from social identity? सिंपल है. पहले मैंने आपको कैसे ही बताया है कि यू विल नेवर डिफरेंशिएट थिंग्स इन अ टैबुलर फॉर्म. नो, यू हैव टू actually differentiate them in horizontal way, actually vertical way, जिसमें you will first write about personal identity, then you will write social identity, right? So it refers to those attributes of a person that make him different from others. Example: name, qualities, characteristics, beliefs, etc. Social identity is the one that refers to those aspects of a person that link him to social or cultural to indicate his social identity. Example यहाँ पे we can write for example introvert, outspoken, you know, and cheerful, bubbly, like that. If this question comes for 3 marks instead of 2, then I want you to give a situational example. Now children, situational example is जहाँ पे आप एक situation को explain करते हुए किसी concept को समझाते हैं. एंड मैं सजेस्ट करूंगी जो सिचुएशन में डिफरेंस यहाँ दिखाएंगे वही सिचुएशन सेम लेके उसका डिफरेंस यहाँ दिखाएं. दिस वे इट बिकम्स easier for somebody who's reading your answer to understand what you're trying to tell. So what are traits? वैसे तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 1 मार्कर होना चाहिए, बट since we can't give you such questions in 1 marker, so we will give you 2 marker. So traits are relatively stable over time. They are generally consistent across situation. Their strength and combination vary across individual, leading to individual differences and personality. Brownie points, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स बटोरना सीखो. इम्पॉर्टेंटली इसमें देखा जाए तो मैंने ट्रेड्स की ही डेफिनेशन को स्प्लिट करा है ना. और मैंने लास्ट में जो पॉइंट है इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पर्सनालिटी लिख दिया है. In any way you can never score below 2 marks in this question. So this is how you go about your answers. What is self-efficacy? So students, we have talked about self-efficacy, we have talked about self-esteem. So you can never ever distinguish between these particular things if you do not read the entire concept of self in the chapter. You can even refer to my lecture, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया था. But self-efficacy in short is कि for example ये एक आदमी है, इसका मन था एस्ट्रोनॉट बनने का, यू नो, ये एस्ट्रोनॉट है मान लेते हैं. एंड सपोजिटली ये एस्ट्रोनॉट बन जाता है तो उसको उसमें सक्सेस मिलती है एंड दैट गिव्स अ बूस्ट इन हिज सेल्फ एफिकेसी. बट रिलेटिवली अगर यही इंसान एस्ट्रोनॉट ना बन के, लेट्स से ये टूल बार है, ये एस्ट्रोनॉट ना बनकर एक इंजीनियर बन जाता है. ऑल्दो बिकमिंग एन इंजीनियर इज नॉट अ फेलियर, बट इसके पर्टिकुलर गोल्स और इसके जिसने अपने आप के लिए गोल सेट करे थे, अपने आउटकम्स जो सेट करे थे उसमें वो अचीव नहीं कर पाता एंड ही फेल्स, एंड दैट इज व्हाई हिज सेल्फ एफिकेसी विल बी लो. So self-efficacy is a cognitive component of self. Self-efficacy refers to one's own effectiveness in achieving one's life outcomes. आप कितने सक्षम हैं अपनी जिंदगी के आउटकम्स को अचीव करने के लिए.
It is an individual's belief about his or own capabilities to get success in specific situation. Understood? The notion of self-efficacy is based on Bandura's social learning theory. Students, you have to mention this. Please, 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 please. इसको तो बल्कि ना ऐसे 2 बार लाइन मार के अंडरलाइन करना ताकि दिखे दैट यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑफन स्टूडेंट्स मिस टू रीड, उन्हें नाम नहीं याद रहता. एंड जब तुम ये सारी चीजें याद रखते हो ना एक आंसर में, योर आंसर बिकम्स स्प्लेंडेड, right? So this is last may you can write about a strong sense of self-efficacy allows us to select, influence and construct the circumstances of our life. Now for example, per se this question comes for a 4 marker. वैसे तो ये आंसर अपने आप में इतना 4 मार्कर के लिए भी ठीक है, बट एंड में इफ दिस कम्स यू कैन राइट अबाउट एन एग्जाम्पल. ठीक है, you have to choose the length of your answer based on the marks. एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म. 3 मार्कर है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि एक 4 मार्कर बन के भी आए. सो डो नॉट थिंक ये तो 3 मार्कर है हल्के में ले लेना, ऐसा नहीं करना है. सो डिफेंस मैकेनिज्म को डिफाइन करने का सबसे सही तरीका है उसको पर्टिकुलरली हमने से उसकी डेफिनेशन को हमने पॉइंट्स में तोड़ दिया. एंड उसके बाद वी विल एक्सप्लेन कि किस टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म है और पर्टिकुलरली उनकी क्या क्या डेफिनेशन है. तो इस क्वेश्चन का ब्रेकअप होना चाहिए 1.5 फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म एंड 1.5 फॉर टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, दिस शुड बी द weightage breakup of this question. Now, while I was a student, मुझे इन सबके नाम याद रखने में बड़ी दिक्कत होती थी. मतलब honestly tell you मुझे तो कॉलेज तक होती थी. Then what did I do is I actually understood कि किस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है. So you have to get it deeper into the concept in order to understand and learn the name. या तो तुम इन्हें किसी गाने वाने से एसोसिएट कर लो, एक नेमेनिक कोड बना लो इनका जो तुम्हें याद रहे. दूसरा ऐसा हो सकता है कि ठीक है, जब भी हमारे को एंजाइटी होती है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उस चीज़ को मना कर देते हैं कि नहीं ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं, पेपर आ रहे नहीं यार, अभी तो टाइम है पेपर आने में. दैट इज व्हेन यू रिप्रेस द थॉट. आप उसको भूलना कोशिश करते हो, आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो बेसिकली. तो दैट इज रिप्रेशन. प्रोजेक्शन इज जब हम अपनी पर्टिकुलरली कोई भी एट्रीब्यूट या पर्टिकुलर कोई भी मेंटल इम्पल्स दूसरा आदमी पे प्रोजेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स ऑन अ स्क्रीन, यू बिकम अ प्रोजेक्टर, यू प्रोजेक्ट दोज ट्रेट्स ऑन अदर पीपल. सो दैट इज व्हेन यू डू प्रोजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप होता है, सो व्हाट डू दे डू, नहीं मेरी गलती नहीं थी, गलती मेरी बंदी की थी बिकॉज शी लाइड टू मी, शी चीटेड ऑन मी एंड द गर्ल इज लाइक नो उसकी गलती थी. सो दिस इज हाउ यू प्रोजेक्ट योर मिस्टेक्स, योर शॉर्ट कमिंग्स ऑन अदर पीपल. Denial is when you refuse to accept the reality, right? When you just do not want to live in the real world and you are like no ऐसा कुछ हुआ नहीं है, this is not true. That is denial. And reaction formation, so every reaction has a no every action has a reaction, right? That's how it goes. So basically जब कोई इंसान एंशियस होता है तो वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने लगे बाई चांस जो उसकी एंजाइटी को कम करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं, लाइक एक्सट्रीम एंजाइटी में होते हैं, वो पर्टिकुलरली फ़ोन चलाते हैं, गाने सुनते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्कआउट करते हैं. सो दिस इज रिएक्शन विच इज फॉर्मिंग अगेंस्ट द एंजाइटी दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग. रैशनलाइजेशन एज द नेम सजेस्ट कि आपको अपने आसपास के रिसोर्सेज को, अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस को रैशनली समझना है और उसके हिसाब से आपको फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है, उनको रीजन वेल करना है और उनके साथ आगे बढ़ना है. सो दिस आर योर डिफेंस मैकेनिज्म का आंसर एंड दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट. आई सजेस्ट कि चलो एक बार को 5 भी नहीं लिख कर आते हो डिफेंस मैकेनिज्म, एटलीस्ट 4 तो लिख कर ही आना. ओके. How Oedipus and Electrus complex different. ठीक है, तो सबसे पहले we will explain what is Oedipus and Electra complex. You will define, explain. ठीक है. Next you will tell कि Oedipus complex में होता क्या है.
कि the boy starts to develop sexual feelings for their mother, they get attracted towards them, and they develop hostility towards their father. And eventually the child comes to know कि उसके पापा मम्मी कैसे कैसे हैं, उनका क्या रिश्ता है, वो उन्हें एक्सेप्ट करने लगता है, और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को जो उसके मम्मी और उसके पापा के बीच में है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, एंड द सेक्सुअल फीलिंग्स दैट ही possesses फॉर देयर मदर ड्रॉप्स. ठीक है. Now we will explain Electra complex. So Electra complex is the vice versa of Oedipus complex. If you don't remember, Electra matlab electric, electric matlab girls, because girls are always energetic and electric in nature, right? And boys are often lazy and stuff. So this is how you will look at it. Just kidding, ऐसा नहीं है. Okay, but you have to remember Electra is girls, Oedipus is boys. So, a female child experiences electrocomplex, tries to act like her mother in order to get love from her dad, develop a feeling of hostility towards their mother. Later on, girls also realize that the relationship between their mother and their father and their father and their mother is a social construct के हिसाब से very acceptable relationship, and they accept, and वो अपनी feelings को drop कर देती हैं and अपनी mummies को role model की तरह देखने लेती हैं. So this is how you will explain Oedipus and Electra complex. Okay. What is an interview and explain its limitations? Okay. So बात करेंगे सबसे पहले इंटरव्यू की. Oh, there are no bullet points. ठीक है? These are your bullet points for this. Please, I request you कि इसको इसी तरह डिफाइन करके आना, कुछ भी इधर उधर का कबाड़ नहीं लिखना इस क्वेश्चन में, क्योंकि it is a very clear cut, simple, scoring, yet a very selective question. You cannot write nonsense over here. You have to be very, focused, and you have to know what you want to write. So, interview refers to purposeful conversation between two or more than two people in a face to face situation. Interview involves interaction with the person being assessed and asking question. It is of two types, unstructured and structured. अब कुछ बच्चे इतने बेवकूफ होंगे, वो इसी में यहाँ पर ना अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड को भी मतलब एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, उसका डिफरेंस ड्रॉ करना शुरू कर देंगे. आई मीन माय डियर लवली स्टूडेंट्स, लुक एट इट. ये सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. मैं कहती हूँ अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मे बी देन, मे बी आप कर सकते हो तब, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइम, राइट. अब 3 मार्क के क्वेश्चन में इतना नहीं लिखोगे. उसके बाद आपसे व्हाट इज इंटरव्यू पूछा है, वी हैव एक्सप्लेन व्हाट इज इंटरव्यू. नाउ विल कम टू द लिमिटेशंस. 1.5 + 1.5 is equal to 3. This is the marks breakup for this question, right? So interviews के limitations are कि वो time consuming होता है, demanding होता है. You can even use the word cumbersome. Nice word it is. Okay. You can also write that maturity of a psychologist is a precondition for getting valid data. अगर कोई particular psychologist इस तरह के एनालिसिस के लिए, इस तरह के असेसमेंट के लिए इतना ट्रेन नहीं है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो उसको डेटा मिले, इट मे बी समथिंग जिसको हम अच्छे से सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन या जिसकी ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन निकालना टफ हो. और अगर हम कोई भी चीज का इंटरप्रिटेशन ढंग से नहीं निकाल पा रहे हैं, वी फेल टू डू दैट, then the whole assessment that we do, which is interview, the purpose of it fails. So, as the chapter ka naam is self and personality, we can also get a question from this, differentiate between self and personality. So, first of all, you will explain about self, or you can either explain personality first, and uske baad write a situational example. ठीक है? Like I have written, when I say I'm one who easily gets hurt, this description of myself leads to me being very emotional, sensitive, and touchy person. All my interaction and my relations with the world and vice versa are related to traits described above, what is called my personality. You can either write an example of this kind, or you can use names and locations, but कोशिश करना एक situational example से आप इनको समझा दो, कि otherwise it's really hard to distinguish between self and personality. Okay. Now, okay, students, इस chapter की सबसे बड़ी highlight is this theory.
psychoanalytic theory of personality by सिगमंड फ्रॉइड. सो इस चैप्टर में एक चीज मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन तो आपका 100% जरूर आएगा. ठीक है, किसी क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में आ सकता है बट आएगा जरूर. साइकोएनालिटिक थ्योरी विल नेवर बी मिस्ड. आई वांट यू टू कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन, कि आप इसका आंसर बेसिकली किस तरह लिखोगे. पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट कि मैं इंट्रो लिखूंगा फिर मैं ये लिखूंगा, जस्ट राइट दैट, सो दैट जब मैं इसका आंसर आपको दिखाऊं सो आपको पता चले कि इसका आंसर एक्चुअली में होना किस तरीके से चाहिए. सो सबसे पहले 2 पॉइंट्स में डिफाइन, इंट्रोड्यूस, जैसे भी आप बोलना चाहो, we will do for the psychoanalytical theory. So it's the most comprehensive approaches to personality and its development was formulated by Sigmund Freud. Remember the name, this is the big daddy of psychology, okay? According to him, behavior is determined by the interplay of events and conflicts within the inner life of individual and is central to this approach. The first part for the answer of this question involves themes of consciousness, which is your pre-conscious, conscious, and unconscious. ठीक है? So Freud compared the human mind to an iceberg. The small part that shows above the surface of the water is conscious. It is individuals' awareness beneath this conscious realm is much larger. Pre-conscious, which contains information that is not currently on our mind, but we could bring into conscious if called upon to do so. Finally, beneath pre-conscious and forming the bulk of the iceberg below the water is the unconscious, which is storehouse of desires, impulse, and inaccessible memories which affect our thoughts and behaviors. Abhi, इस आंसर में you must have noticed I am using the analogy of iceberg to explain the concept for two reasons. एक, इससे आंसर समझ में बहुत अच्छा आएगा जो भी आपका आंसर पढ़ेगा. टू, लेंथ के लिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कह रही हूँ, एग्जाम में आपका लेंथ ऑफ द आंसर इज वेरी क्रूशल. आपके आंसर का लेंथ अच्छा होना जरूरी है, और 6 मार्कर में तो स्पेशली. Second part of the conscious psychoanalytic theory after conscious is your structure of personality, that is your id, ego, super ego. Okay, you will define each of them अच्छे से. And the last part of this particular answer will be the explanation of ego defense mechanisms. इसकी यहाँ पे सिर्फ आप डेफिनेशन दे दीजिए, दैट इज इनफ. बट अगर यही कुछ लोगों के लिए 8 मार्कर बन के आता है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के होते हैं, सो इन दैट केस आप यहाँ पर यू कैन मेंशन अबाउट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एज वेल, जो मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था. यू कैन डू दैट. बस उनका छोटा छोटा एक एक लाइन का मतलब लिख दो बस. हॉट्स होता है स्टूडेंट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो सबके पास नहीं होते हैं. आपके पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो सब बच्चों के लिए नहीं होता. ठीक है, वो क्वेश्चन होता है बेसिकली उन बच्चों के लिए जो इस तरह की चीजों को सोच सके. अभी आप कहोगे मैम साइकोएनालिटिकल थ्योरी तो वी जस्ट डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, हमें उसे दोबारा क्यों कर रहे हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट डिस्कस, इट्स नॉट एक्सप्लेन, इट्स इवैल्यूएट, एंड दैट टू क्रिटिकली. मतलब इसकी नेगेटिव स्ट्रेंथ्स को हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है. तो in this answer we will write कि psychoanalytic concepts are vague and not operationally defined, and the hypothesis derived from them cannot be tested, hence they are not scientifically proven. किसी चीज को साइंस बनाने के लिए कम से कम उसे टेस्ट तो कर सके, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चलो जो भी आंसर आता है हम उसको रेप्लिकेट तो कर सके, और जो हम यही नहीं कर पाते हैं तो दैट होल कॉन्सेप्ट, द होल थ्योरी in itself becomes very weak, right?
The Freud postulates are not consistent with the findings of modern research. For instance, his ideas about meaning of dreams. Okay, so ये जो फ्रॉइड ने हमारे को थ्योरी दी थी, इट इज वेरी ओल्ड. ठीक है. एंड आज की मॉडर्न साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, विच इज योर एपीए से रेगुलेटेड साइकोलॉजी, उसके हिसाब से फ्रॉइड्स के पोस्टुलेट्स, उसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट much applicable. So again, this becomes a very big drawback of psychoanalytical theory. अभी चलो ध्यान से ही चलते हैं. जब भी कोई रिसर्च होती है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए ये पूरी हमारी पॉपुलेशन होती है. ठीक है, इसमें कुछ हम लिमिटेशंस लगाते हैं. और इस पॉपुलेशन को हम पूरी को टेस्ट नहीं कर सकते, हम 100% पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं कर सकते. अगर मैं बात करूँ, इफ आई वांट टू चेक द मेंटल हेल्थ ऑफ 15-year-olds इन द वर्ल्ड, मैं सारे 15-year-olds को थोड़ी ना टेस्ट कर सकती हूँ. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. So what I do is I take a bunch of 15 years old that become my sample. ठीक है. Now the conclusion I derive from this sample is generalized for the entire population. But in the case of Freud, इसने सिर्फ अपर क्लास women को ही अपने सैंपल में इंक्लूड किया. अभी अपर क्लास women are not representative of the whole population because they are resourceful, they are privileged, है ना. वो पूरी पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज कॉमन है, विच इज दैट दे आर अपर क्लास. लोअर मिडिल क्लास भी होती है, लोअर क्लास भी होती है, उससे नीचे भी होती है, उससे ऊपर भी होती है इनफैक्ट. सो you cannot expect everyone to have similar development of personality, and that is why this is a very big drawback for the theory which Freud gave us. The theory is criticized for having male centered perspective, and it views women as more sensitive and dependent on men. Sigmund Freud ने जब हमारे को ये थ्योरी दी थी ना, वो टाइम ही ऐसा था जहाँ men were on the forefront, they were the driving force, they were responsible for the actions that were happening in their households, they were also the head of the household, they were caretakers of the family, they would feed them, they would provide for them. And that is why the whole time, the whole I would say the period in itself जहाँ पे Sigmund Freud ने ये काम करा है, it becomes patriarchal. ठीक है, पेट्रियार्कल होने की वजह से वो जो एक पर्टिकुलर सोशल बायस था सिगमंड फ्रॉइड ने का टुवर्ड्स वुमेन, विच इज दैट दे आर सेंसिटिव एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन मेन, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ये पूरी की पूरी थ्योरी जो थी ये मेल सेंटर्ड बन गई. इसने विमेन को ओवरलुक कर दिया है, उसने उनको एग्जैजरेट कर दिया एज सेंसिटिव एंड डिपेंडेंट बीइंग्स, विच इज नॉट ट्रू. आज के टाइम में इट्स नॉट ट्रू, राइट? आज के टाइम में women are doing everything that a man can do, even more. So what was applicable then is not applicable now, and that becomes a drawback for something so crucial, which is the development of personality ki theory. Okay, it also is criticized for overemphasis on sexual desires of it because social and cultural factors also influence personality development. um I use this particular phrase called sorry, quadrant of sexual urges. अगर ये आंसर में लिख के आता तो आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा. ओके, ये मेरी बुक में है, आपकी 12th की बुक में नहीं है, बट दिस इज अ वेरी नाइस critical I would say remark for the theory of personality. तो फ्रॉइड का मानना ये था कि इंसान का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इट्स ऑल रिवॉल्विंग अराउंड सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल अर्जेस, सेक्सुअलिटी ऑफ अ पर्सन. सो इट वाज एज इफ पर्सनालिटी के पोस्टुलेट्स जो थे, दे वर प्लैनेट्स, एंड द सन in the solar system was sexual urges, which is again very incorrect because कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, फैक्टर्स जो सोशल सोसाइटी से हमें मिलते हैं, सोशल इंटरेक्शन से मिलते हैं, दे आर ऑल्सो समवट रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड दैट इज अगेन समथिंग दैट फ्रॉइड ओवरलुक्ड. सो एट द एंड यू कैन राइट कि हमने फ्रॉइड की थ्योरी को अपने टाइम के हिसाब से मॉडर्न मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से मॉडिफाई किया, उसको इम्प्रूव किया, और आज के टाइम में हम उसको अगेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यूज कर पा रहे हैं.
because you have to conclude your answer in a 6 marker, स्पेशली एन आंसर जहाँ पे आपको इवैल्यूएट करने को कहा है, कंट्रास्ट करने को कहा है, क्रिटिसाइज करने को कहा है, अप्रिशिएट करने को कहा है, यू हैव टू ड्रॉ अ कंक्लूजन. सो मैं ये चीज़ जो थी स्कूल टाइम में नहीं समझती थी कि कंक्लूड करना कितना इम्पोर्टेंट है. ये सारा जो लिख कर आए हो ना, ये सारा धरा का धरा रह जाएगा इफ़ यू डू नॉट कंक्लूड. क्योंकि कंक्लूजन ना देना इज़ लाइक basically a movie without credits. It looks incomplete. So you have to write a conclusion. This is the takeaway from today's lecture. And if you have any doubts or any questions, or अगर आपके आपके कोई पास कोई और ऐसे important question हो जो आप चाहते हैं कि मैं उसका जवाब आपको बताऊं किस तरह होना चाहिए, please comment it in the section. I will type the answer for you and you can look at it, right? So you will also get a PDF of this particular सारे questions जो मैंने यहाँ पे discuss कर रहे हैं. आपको particular screenshot click करने की जरूरत नहीं है. You can get the PDF of it. Just attempt the link में दिया हुआ quiz so that आपको PDF जो है वो मिल जाए. So in this way you are also getting to do a quiz which is also based on this chapter, and you're anyway getting the questions. So it's a win-win anyway. So have a nice day everyone. एंड अपनी जोर शोर से तैयारी करो एग्जाम्स के लिए. एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं. चलो, हैव अ ग्रेट डे.